Okay, so I think I will wait for a few more minutes so others can join. Of this tutorial session where we solve uh, problems regarding your assignments. So uh, from every Saturday from 5 to 7 p.m. So if you have any doubts regarding the assignment solving of your course, you can ask that problem here, and we will try to solve that problem. And one more thing that I will upload all these videos on YouTube where you can watch them later on. In case you have missed this class or if you have having difficulty accessing this thing, accessing this class right now, but you can watch it later on at your own convenience. Okay, so I will wait for around 2-3 minutes and then we will start the class. Okay, so I think we can start now. So first, we will review our course content that we are going to discuss today. So I will briefly mention the Biot-Savart law, then NPTEL law and its application. Then we will see how this magnetic field can be written in terms of a vector potential and what are the equations for it. And then how the magnetism is in the materials, how it behaves in presence of magnetic field, and then what are the consequences for magnetic material having a magnetization and how it can be related to a bound current. And we will solve some related problem also. Okay, तो हमें पता है कि जो बायो सावर्ट लॉ है वो ये बताता है कि अगर एक सर्किट में किसी एक गिवन सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उसके वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर जो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर और उसकी डायरेक्शन को हम इस राइट हैंड रूल के हिसाब से देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं जैसे कि अगर करंट इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है तो हम अपना अंगूठा उस तरह का रखेंगे और इसको ऐसे रोटेट करेंगे अपने हाथ को। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसे होंगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको फिर हम इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो चार्ज थे वो एक एक पॉइंट पर ऐसे रखे हुए थे और वो बहुत स्टेशनरी चार्जेस थे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे समय के साथ। समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ एक जगह पर रखे हुए थे। उनकी वजह से जो फील्ड आ रही थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड थे, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारी चार्ज करंट है, अगर चार्ज करंट समय के साथ बदल नहीं रही तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। चार्ज करंट समय के साथ नहीं बदल रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप
T1 समय पर चार्ज करंट आई नॉट है और T2 समय पर भी चार्ज करंट सर्किट में आई नॉट ही हो, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगी वो स्टडी मैग्नेटोस्टैटिक होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब ये है कि हमारे पास जैसे विद्युत विद्युत आवेश की वजह से एक विद्युत फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसी तरह से हमारे पास एक चार्ज करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इस लॉ के हिसाब से हम एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर हमें दिया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हाइल कैरिंग द स्टडी करंट आई। तो इसमें हमें एक पॉइंट पी है और एक वायर है जिसमें एक करंट आई फ्लो हो रही है और उससे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा पॉइंट पी पे। तो इसको हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन वन है हमारे पास। अ, एक वायर है, सॉरी फॉर दिस। एक वायर से एक डिस्टेंस पी है और इस डिस्टेंस से एक ओके, सो ये डिस्टेंस हमारी इधर हमें गिवन है क्वेश्चन में, और वो है कि डिस्टेंस आर है, यहाँ से ये डिस्टेंस आर है और पॉइंट पी से हमें एक लाइन भी ड्रॉ करनी है। पॉइंट पी से यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एंगल थीटा बनाती है, किससे? वो डीएल, इसके नॉर्मल से, जो नॉर्मल हमने वायर पे खींचा है। और हम एक लाइन एलिमेंट लेते हैं, अलग कलर से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट हम लेते हैं एल, यहाँ से यहाँ तक एल, ये हमारा आर है और ये एस है। तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास एक स्मॉल लाइन एलिमेंट होगा, जो ये होगा यहाँ पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट, ये इतना लाइन एलिमेंट, ये है डीएल, जो चेंज है थोड़ा सा चेंज। और डीएल हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है सर्किट में, और ये अल्फा एंगल बना रहा है। ये जो आर डिस्टेंस को मिलाने वाली जो रेखा है वो अल्फा एंगल बना रही है करंट की डायरेक्शन से या डीएल एलिमेंट से। तो इस फिगर में हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं एक क्योंकि ये इसका कर्ण है ये इधर लंब लंब है, ये थीटा थीटा के लिए, और ये आधार है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इस डिस्टेंस को लिखना चाहें कर्ण के उसमें, तो हम लिख सकते हैं कि एल कॉस थीटा, नो नो, एल साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब अगर हम कर्ण को क्योंकि हमें पता है कि आर जो होगा वो होगा एल साइन थीटा, और जो एस होगा
और अगर हम ऐसे करें डी आर इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा डी एल, क्योंकि थीटा फिक्स है तो थीटा मूव नहीं करेगा, साइन थीटा। और अगर हम और देखें मतलब यहाँ पर डी आर हमें पता चल गया साइन थीटा होगा। इसके अलावा हमारे पास फिर हमें हमें सबसे पहले बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से डी बी लिख लेना चाहिए। डी बी हमारे पास क्या है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, तो हम लिखेंगे इसको म्यू जीरो ओवर फोर पाई आई, आई और डी एल सेम डायरेक्शन में, तो डी एल, और डी एल जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो साइन अल्फा, तो डी एल के साथ हम हटा देंगे इसको मल्टीप्लीकेशन को, आई डी एल साइन थीटा। तो ये रहता है एक्चुअली आई पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस रहती है उसका ये क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। तो मतलब पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनके बीच के एंगल के साइन थीटा के बराबर होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो आई डी एल और आर के बीच में जो होगा, तो ये होगा आर यूनिट वेक्टर के मीन्स इसके इस यूनिट वेक्टर के बीच में जो होगा वो साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पर अपान आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम फिर, चूंकि हमने अभी क्या है हमारे पास जो बायो सावर्ट लॉ होता है वो ये बताता है किसी लाइन एलिमेंट से या किसी चार्ज करेंगे ट्यूब से जो फील्ड होता है वो होता है म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल आर क्रॉस ओवर आर स्क्वायर, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना हमने देखा कि हमने स्मॉल एलिमेंट की वजह से, जो यहाँ पर ये एलिमेंट है डी एल एलिमेंट, इसकी वजह से हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। अब हम क्या, इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे वायर की वजह से कितना होगी। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो बी हमारे पास हो जाएगा म्यू जीरो फोर पाई, तो आई बाहर आ जाएगा डी एल साइन अल्फा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम डी एल को पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो डी एल साइन अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो, और ये एल है, तो इस एंगल को हम, ये एंगल हमारा होगा 90 माइनस अल्फा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम लिखें 90 माइनस अल्फा और साइन, सॉरी कॉस, कॉस 90 माइनस अल्फा इंटू एल इज इक्वल टू आर होगा, क्योंकि हम हमें पता है ये जो कॉस ये यहाँ से थीटा है, और ये आधार हो जाएगा इस एंगल के लिए, और ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आर होगा। तो हमें पता चल गया कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन अल्फा एल इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन वन, इक्वेशन टू से हम ये देख सकते हैं कि एल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा एल। ओके, लेकिन जब सॉरी, ये होगा हमारे पास यहाँ पर आर, आर हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, क्योंकि आर है जो है वो कर्ण है, तो कर्ण कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो एल होगा आर साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एल साइन थीटा इज इक्वल टू ये है। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है, हमें देखना है कि चेंज कैसे आ रहा है।
तो हम अगर यहाँ पर देखें डी एल इज इक्वल टू साइन अल्फा डी आर, ठीक है, इस इक्वेशन से। और हमें पता है कि जो एल इज इक्वल टू आर साइन थीटा पहले से दे रखा है, तो वहां से हम देख लेंगे डी एल इज इक्वल टू आर साइन थीटा और साइन थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा टी आर साइन थीटा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें जो डीएल में जो चेंज है यहाँ पर, और उसके साथ अगर साइन अल्फा है, तो ये चेंज बराबर होगा, मतलब डीएल साइन अल्फा विल बी डी आर साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, ये इक्वेशन में हमने साइन अल्फा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमें पता चला डीएल साइन अल्फा हमारे पास हो जाएगा चूंकि अब हमें पता है कि जो डी आर साइन अल्फा है वो डीएल है, डीएल साइन थीटा। तो हमें ये पता चल गया कि इस डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा ओवर आर स्क्वायर में अगर हम डी एल साइन थीटा से रिप्लेस कर दें इसको, म्यू जीरो 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मतलब इस डीएल एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड है। तो हमें पता है साइन थीटा इस फिगर से, साइन थीटा इस फिगर से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा होगा हमारे पास, ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे बी इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे डी एल, और यहाँ पर लिख लेंगे एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एल, और यहाँ से हम इसको भी लिख लेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हमने पहले आर लिख लिया अभी, और ये कॉस थीटा लिख लिया। तो अब हम इसको, ये डी बी है, सॉरी ये डी बी है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे म्यू जीरो ओवर 4 पाई, तो आई बाहर आ गया, डी एल जीरो से इन्फिनिटी तक, तो एल डी एल ओवर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1+1/2, ये हो जाएगा p इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई आई जीरो टू इन्फिनिटी एल डी एल, और यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन हमें पता है कि अगर हम एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को हम सम कांस्टेंट y मान लें, y, तो ये इम्प्लाई करता है कि डी एल डी एल इज इक्वल टू 2y, वाई स्क्वायर मान लें 2y dy, और इसका मतलब एल डी एल इज इक्वल टू वाई डी वाई। लेकिन जो लिमिट्स होंगी हमारी, जब एल इज इक्वल टू जीरो है तो वाई इज इक्वल टू एस होगा, और एल इक्वल टू जब इन्फिनिटी है तो वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई आई, अब हम एल डी एल की जगह पे वाई डी वाई लिख देंगे, और
एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2 की जगह पे वाई स्क्वायर की पावर 3/2 लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, और यहाँ पर वाई डी वाई, वाई टू द पावर क्यूब, और y से y का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल म्यू 0/4 पाई आई -1/y। और फिर इसको हम लिखेंगे कहाँ से, लिमिट है, इसकी लिमिट है हमारी फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। तो पहले तो हम लिख देंगे इसको म्यू 0/4 पाई आई इंटू, इसकी वजह से फिर हम देखेंगे कि ये है -1/इन्फिनिटी, और माइनस माइनस प्लस 1/s, तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 0/4 पाई आई ओवर एस। ओके, तो ये हमारा एक इन्फिनिट वायर की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग: find the magnetic field at a distance z from the center of circular loop of radius r which carried the steady current I। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन टू में हमें सबसे पहले एक सर्कुलर लूप लेना है, और उसके बाद इसकी वजह से हमें एक जेड डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक लाइन एलिमेंट की वजह से अगर इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ये डिस्टेंस में पता है ये कैपिटल आर है, और ये अगर जेड डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कांस्टेंट रहने वाला। अगर हम इस तरफ इस पाथ पर मूव करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा, पहले आर डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो आर डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी ये डिस्टेंस, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और जो कॉस थीटा होगा वो होगा आर ओवर अंडर रूट आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, कैपिटल आर स्क्वायर। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो डीबी होगी, होगी म्यू 0/4 पाई आई, और जो डीएल है, और डीएल और जो डीएल ये है इस डायरेक्शन में स्मॉल एलिमेंट, और जो ये आर है, आर कैप इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस पर बिल्कुल टेंजेंशियल है। तो आई डी एल साइन थीटा साइन पाई/2 हो जाएगा, और अपॉन आर स्क्वायर हमने देखा है कि वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हमें ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें देखना है कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई बराबर डी एल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो डी एल एलिमेंट है ये वेरी कर रहा है। डी एल एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये मूव करता है, तो जो ये अगर ये डीएल एलिमेंट है, तो मान लेते हैं ये वाला भी यहाँ पर एक स्मॉल सा डीएल एलिमेंट है। तो अगर ये एंगल थीटा था पहले, और ये थीटा 1 से, मान लीजिए यहाँ से थीटा 1 था, और यहाँ तक ये थीटा 2 है, तो ये जो डीएल एलिमेंट होगा ये होगा आर डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने अभी तक इस डायरेक्शन में फील्ड निकाली है, पूरा इस डायरेक्शन में, लेकिन हम देखेंगे कि सिमेट्री की वजह से इस डायरेक्शन से भी फील्ड्स आएंगी, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से भी और यहाँ से, ये
इनके जो साइन थीटा कंपोनेंट्स होंगे वो अपोजिट होंगे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली। इस वाले कंपोनेंट का वेक्टर डिकम्पोजिशन ये बी वन कॉस थीटा और ये बी वन साइन थीटा। इस वाले की वजह से ये हो जाएगा बी टू कॉस थीटा और बी बी टू साइन थीटा। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ये तो बराबर है दोनों में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सम हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल ये तो सिर्फ डीएल की वजह से था, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी बी जो होगी वो होगी क्लोज इंटीग्रल बी होगी वो होगी समेसन। समेसन को हम इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर, थीटा आई और आर डी थीटा इंटू द इसका जो ठीक कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, इसका सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। तो मतलब ये ओवर आर स्क्वायर टू जेड स्क्वायर ओके इंटू कॉस थीटा ये होगा। लेकिन हमने कॉस थीटा पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, तो कॉस थीटा हमारे पास है म्यू जीरो ओवर फोर पाई आई आर डी थीटा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू है आर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो इसको हम देखते हैं, ये सिंपल इंटीग्रेशन है जहाँ पर थीटा जो है जीरो से 2 पाई तक वेरी होगा, इन प्लेन स्वीप करेगा पूरा, म्यू जीरो ओवर फोर पाई आई इंटू आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और हम मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2z डी जेड इज इक्वल टू 2y डी वाई, और यहाँ से जेड डी जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा वाई डी वाई। तो हम यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, म्यू जीरो ओवर लिमिट्स हम बाद में रखेंगे, म्यू जीरो ओवर फोर पाई आई आर डी थीटा की जगह पर ओके ओके सॉरी, बट हमने यहाँ पर देखा कि इसको तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा अगर इससे हमने रिप्लेस कर दिया तो हमें इसको सम करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट ही होंगी। तो इसके लिए हमारा क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा तो इसको हम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पता है कि जो थीटा है वो 0 से 2 पाई तक चेंज होगा। तो हम यहाँ पर बी इज इक्वल टू 0 to 2 पाई और म्यू जीरो ओवर आई ओवर फोर पाई और आर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 3/2 इंटू डी थीटा। तो ये हमें पता है इतना पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, ये थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू जीरो आई ओवर फोर पाई आर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई, क्योंकि 0 to थीटा और 2 पाई में हो रहा है। तो यहाँ से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जीरो म्यू जीरो ओवर आई फोर पाई आर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर 3/2 और यहाँ पे 2 पाई आर। तो अगर हम इसके पाई से पाई कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई ओवर टू आर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर सॉरी आई फॉरगॉट टू शेयर बट for this element, if this is the angle theta from this point P, so we can solve the magnetic field due to this point only. Then after that
we can also solve for this other element here, but they are like in opposite in direction, and just uh, the magnetic field that will be at this point, the sign component of that field will be opposite to each other, and the cos theta component will be in one direction, and they वो उसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमें जो पता चला है कि cos थीटा को हमें जोड़ना है, तो हमने क्या किया, हमने एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाला, और उसके बाद फिर क्या किया, हमने उस एलिमेंट को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया और थीटा पर जोड़ लिया। तो इसी वजह से इंटीग्रल लगा दिया हमने, बट लेकिन हमें cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया, और हमने फिर थीटा पर सम कर लिया, क्योंकि थीटा 0 से 2 पाई में जा रहा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर पूरा 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट किया, और उसके बाद हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। तो ये वैल्यू हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जेट कैप डायरेक्शन में होगी, तो उसको उस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ तक मैं पूरा दिखाना चाहूँगा कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो जेट डायरेक्शन में इतनी आ रही, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है। तो एम्पियर्स लॉ हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, अगर एक सरफेस हम लेते हैं और उससे होते हुए कुछ चार्ज करंट्स जा रही हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सरफेस है, वो कुछ चार्ज, सॉरी, जो कुछ मतलब करंट जा रही है उस सरफेस के थ्रू, उसको इनक्लोज कर रही है। तो जैसे अगर मान लो ये मेरी इस पेंसिल में चार्ज करंट फ्लो हो रही है, और इसके चारों तरफ मैं एक अपने हाथ से जैसे एक लूप सा बना लूँ, जैसे आप देख सकते हो कि एक लूप सा बना लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा लूप है, इसके चूंकि ये इनको इसको अपने अंदर समाहित कर रहा है, इस पेंसिल के करंट को, मतलब इसको इनक्लोज कर रहा है, तो इसके वजह से इसके वजह से जो फील्ड होगा, ये फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज पॉइंट ऊपर को फ्लो हो रही है, तो जो फील्ड होगा वो इस लॉ के हिसाब से दिया जा सकता है, जो सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसके परिधि पर, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे चारों तरफ हम, और उसको इक्वल टू हम लिख देंगे म्यू जीरो आई इनक्लोज्ड, और आई इनक्लोज्ड की वैल्यू हमें पता है, तो बहुत ही आसानी से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एकदम सेम है जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में गॉस लॉ देखा था, जहाँ पर बी डॉट ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। मतलब आप अगर चार्ज को इनक्लोज कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आई करंट को इनक्लोज कर रहे हो उसके सरफेस में, और उसके बाउंड्री पर अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के बी डॉट डी एल लिखो, तो वो आपके पास आ जाता है म्यू जीरो इक्वल टू आई इनक्लोज्ड। ये बिल्कुल ही सेम तरीके से देख सकते हैं। तो जहाँ पर ये हो जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। तो हमें कहा गया फाइंड द फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर, बोथ लूप्स कैरी ए स्टेडी करंट आई। तो हमें पता है कि जो ये अगर हम देखें कि अ, जो एक वायर होता है इन्फिनाइटली लॉन्ग है अगर, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है, अगर मान लो आपके पास वायर है, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं, अपने नंबर 3 पर जाएंगे। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक वायर है, उससे एस डिस्टेंस पर एक स्क्वायर रखा है, और इसकी साइड्स जो हैं ये हैं एक ही, इनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो आ, लंबाई है वो ए है, ठीक है। इसको हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये एस है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी करंट आई ही फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, आई करंट। तो अभी अभी हमें पता है कि जो
मैग्नेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो अगर एस डिस्टेंस पे होता है म्यू जीरो आई ओवर टू पाई एस। एस जो यहाँ से डिस्टेंस है, अगर आप एस डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहे हो तो म्यू जीरो आई ओवर टू पाई एस होगा। ओके, तो ये इतना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले इस वाली साइड पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इस वाले पर, और उसके बाद इस वाले और इस वाले पर देखेंगे। तो हमें सबसे पहले पता है कि अगर ये यहाँ पर डीएल एलिमेंट होता, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स, ये क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स पैरेलल हैं। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि मान लेंगे कि जो जो हमारा वायर है, अगर ऐसे उसमें करंट फ्लो हो रही है तो राइट हैंड के रूल से कि ये इसके इस साइड में, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यहाँ पर बाहर की तरफ आएंगी। ओके, बाहर की तरफ आएंगी। और हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है, अगर मान लो आपके पास एक कोई लाइन एलिमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इससे थीटा एंगल बना रही है, तो जो साइन थीटा होगा कंपोनेंट इनके दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब जो हमारा फोर्स लगता है इस एलिमेंट डीएल पर, होता है एफ इज इक्वल टू आई करंट डीएल टाइम्स बी, ये होता है एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ओके, तो हमें फोर्स ही कैलकुलेट करना है। तो चूंकि अब यहाँ पर और इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल बना रही है 90 डिग्री। ओके, तो इसको हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री है, तो पहले वाले लूप पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इस आर्क पर 1 पर, फोर्स 1 हो जाएगा, एफ वन इज इक्वल टू आई, बी की वैल्यू हमें पता है म्यू जीरो आई, अगेन ये अभी आई भी आई, म्यू जीरो ओवर टू पाई एस और साइन पाई बाई टू। यहाँ से हमें पता चल गया म्यू जीरो आई स्क्वायर ओवर टू पाई एस, एफ वन हो गया, एफ वन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, चूंकि हमें पता है कि एल, जैसे एल इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में अप है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रखेंगे अपने हाथ को इस डायरेक्शन में, एल की डायरेक्शन में, और उसके बाद हम बी की तरफ पॉइंट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बी अगर ऐसे ऊपर है तो जो फोर्स लगेगा वो सीधा अंदर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, मतलब इसको ये खींचने का प्रयास करेगा इस डायरेक्शन। और उसी तरह से अगर हम ऊपर वाली लूप पर कैलकुलेट करें, तो जो डिस्टेंस होगी टोटल, ये हो जाएगी एस यहाँ तक और ए यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एल प्लस ए। जो फोर्स लगेगा इस पर, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में इस तरह से थी, सॉरी एक भी डायरेक्शन की कन्वेंशन ले लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में है, तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो होगी और इसमें इस तरह से वापस आएगी, तो करंट की डायरेक्शन अलग है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ इस केस के लिए हम फिर हमारे पास डीएल की डायरेक्शन ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर है, डीएल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो होगा डीएल क्रॉस ये बी, तो ये हमारे पास फोर्स ऊपर की तरफ ले जाएगा, मतलब वायर की तरफ, वायर से दूर ले जाएगा। तो
ये दूर की तरफ ले जाएगा, हमने पहले गलत करने की कोशिश किया था। और ये फोर्स जो है इसको वायर की तरफ लेके आएगा, क्योंकि अगर आपका डीएल एलिमेंट ऐसा है, मैग्नेटिक की डायरेक्शन ऐसी है, तो आप देखो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करो आप, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल एलिमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट आपकी तरफ मतलब वो वायर की तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे म्यू जीरो आई स्क्वायर 2 पाई एस प्लस ए। ओके। और दोनों अलग, इन इस वायर के लिए और इस वायर के लिए क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पर जो ये इन दोनों वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी। और ये डिस्टेंस जो भी चेंज हो रही होगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, लेकिन इनका जो टोटल रिजल्टेंट फील्ड होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस जो इस दोनों पर टोटल लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स रहेंगे, इस वजह से और इस वाले। मतलब अगर ये यहाँ पर एस डिस्टेंस पर है, तो ये जो आर्म है, ये वाली आर्म 1 और ये 2 की वजह से फोर्स लगेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा म्यू जीरो ओवर 4 पाई, कॉमन है, आई स्क्वायर भी कॉमन है, सॉरी म्यू जीरो ओवर 2 पाई कॉमन है सब में। तो यहाँ पर 1 ओवर एस प्लस ए माइनस 1 ओवर, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर क्योंकि जो लूप की लेंथ है वो ए, आई स्क्वायर ही कॉमन हो जाएगा, माइनस जो हमारा फोर्स होगा वो होगा, इसको हम सम कर लेंगे। ये वाला, ये ये फोर्स हमारा कम है और ये ज़्यादा है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे म्यू जीरो ओवर 2 पाई आई स्क्वायर ए, और उसके बाद पाई, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे माइनस एस माइनस ए, सॉरी माइनस ए प्लस एस प्लस ए ओवर एस, so it should be s, okay, sorry, it's mistake, so it should be s, or and it is will be here also. So you have this 1 over 0 over I square a over 2 pi, okay, and s plus a, then s will cancel out the s, and you have a square, and you have s into s plus a, okay. So here is the force that will act downwards, okay. Now what we want to do is go to the next question. It's question number 4. So where we have a seed current and the surface the surface current, and the coordinate system is given. We have to draw that x, y, and g, and the surface current in the x direction. We have to draw the also. Okay, so here what we can do. Okay, first let me save my screen.
is what it is given, and I think the current density which is the kx x cap direction, k vector region, kx cap, so k is the magnitude. अब हमें क्या करना है इसकी वजह से, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, एक चार्ज करंट फ्लो हो रही है, इज इक्वल टू के एक्स। ओके, इसकी वजह से हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है और ये प्लेन की वजह से ऐसा फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता है कि अगर एक सिमेट्री में मिलती है तो हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो हम एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे ऐसा कुछ, और उसके बाद हम फिर हमें पता है कि अगर इस गॉसियन सरफेस के चारों तरफ हम लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर ये अगर एक यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है चार्ज करें, और इसकी तरफ हमें स्क्वायर बॉक्स में, नॉट स्क्वायर, एक रेक्टेंगल कुछ भी कोई शेप है, उसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, और इसके बाउंड्री पर हम अगर बी डॉट डी एल को देखें कैसे चेंज हो रहा है, तो हम आ, ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो सबसे पहले हम हमारे लिए हम लिख लेते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल शुड बी म्यू जीरो I enclosed. Okay. Now, since this is the surface charge density, so we have to multiply this mu zero. Okay, mu zero is constant, just write it outside. But what is the enclosed value of this? So this is the surface charge. We have to multiply it with the length. Okay, means this area kx cap, and then uh, okay, and then the we have to sum it over the area. So area is what? Area we have this. Okay, now the charge current will be K dot dl, right? Uh, whatever this is, because this is the surface current density. Surface current density. So the charge current density will be charge current density. Multiplying this with K x dot dl. Okay. So the all the components that are in the x direction will survive, and other components will die out. So this means that uh, to this infinite, which is yz thing, what we have here, magnetic field will be okay, this length is L, this length is L. So what we can do is dot dl. Okay, because the charge current density K is equal to kx cap, and it is defined in a such a way that if you have a dl element here, this one is the dl element, and this is the charge current direction. So this is the dl perpendicular, this is charge current flow direction. The charge current density is defined as di over dl perpendicular. So here
we can see that the di will be nothing k into mod of k. Okay, now let's say it's a pi vector. So mod of I will be TL perpendicular mod of k. So in our case, what is happening here is this, that this is the x, this is the y, and this is the z, and we have a plane here. Sorry, this is the plane, the xy plane. So this is xy plane. Now these are the charges these are the current that are flowing on the surface. Now we can draw an imperial loop perpendicular to this. Okay, that means if this loop has a length of dl, then uh, if let's say we are going in this direction, this direction, this direction, this direction, then the field, okay, this is just parallel. If you want to have this one, want to calculate the magnetic field, first what you plot it like this, plot it, then plot a plane like this. Now if you calculate some element from this is the dl element, the in plane, then what will happen? This is the current direction in this direction. The current direction is also in this direction. Then what will happen? Once you start to calculate this field at some point z here, what you will find is that there is equal and opposite, because uh, this is in this direction and this is also in the same direction. So what will happen? The forces that is acting on are this I and the magnetic field at this position. Sorry, the field will be due to I will be like I dl I in the same direction I dl and the sine theta for infinite plane. So sine theta will be pi by 2. So means all the fields values will be theta will be pi by 2, means the sine component will be like this one, and the other, for due to this, the sine component will be like this one. There is no cos component. So what will happen? Uh, because it will make a 90-degree from here at the plane. So that's why sine theta is this, and they will cancel out. So there is no z component. Now we know the Ampere's law. So here what we can do, we can draw a pillbox in yz plane with length L from here to here. This length is L, and let's say it has something A. So since what we are doing that B dot dl close integral about this thing, which is enclosing the charge current, that is this one, and it is being enclosed by this one. So V dot dl is equal to mu I enclosed. So this means that V has no z component, and dl, if you write this dl as dx dy I j cap plus dz k cap. Since there is no k cap in the magnetic field, it will be its component will be dot product will be 0. So what you are left with is the y dy and mu 0 I enclosed. Now how much current is enclosed? That you have this surface current, and then you are taking the dot product, means uh, not the dot product, you're taking the mod of the dl, because, and what is the dl perpendicular here? I told you that how you calculate this. So dl perpendicular is nothing but this one, the L. So goes from 0 to L. So you have this mu 0 k perpendicular. Sorry, not the k perpendicular. The charge density is k x direction, and dl in y. dl
is perpendicular to x. Indeed, and here we have this, and since this py will be integrated on this dl will be twice, so 2b l, and others contribution are 0, so b is equal to mu 0 k over 2, and the direction of this will be, okay, so we have this current loop, and we want to know what is the direction. So just place your hand like this, the current surface, and you will have the direction. The direction will be the it will be on the plane, but it will be like going in and then coming out. So the direction will be for z less than 0, z less than 0, for z less than 0 it will be uh, means on the top it will be like going in, and from the bottom it will be like going out. So like this, and this is like a point because it will be like an cross which is going in on the back side of the arrow, and it will be like point because it's going coming out. So it is like this, so it's like this, and this. It will be a curly one, but z1 z greater than 0, it's like this, and it's going in, so we have to do the minus y, and for z greater than 0, first z less than 0, because it's coming out the y direction, it's in y, but it's coming out, so it will be like this. At some point here, if you calculate this z is equal greater than 0, so what will happen? The distance is like this, the current is like this, and the distance you have is up. So what you do, put like put your finger, this thumb on the current line, then calculate the point is up. So that will be like this one, and okay, so the field lines will be like along this y direction. Sorry for that. And if you go some point here, so what will happen? So it will be like somewhere you are this, and you have to do a cross product. So you go like this, cross product of this, and like this, the dot will be like this one, and this is the minus y direction. And if you put some point, let's say here, so then what you will be doing is this, and this will go like this, and the cross product will be a plus y cap direction. Okay, so the cross product I'm talking about is the DL, DL is in the G, and the R cap, sorry, R cap is in the this one, and the DL is in the X cap, R cap in the G direction. So it's natural that DL cross R cap is nothing but DL into X cap into Z cap and Y cap.
Now we go next. Next question is the following. So we have a large plate capacitor with uniform surface charge on the upper and negative on the lower one. So I can show you the question. So we have a large plate capacitor with this where we have question number 5. We have this large plate sigma. Again, then we have a second plate minus sigma. Both are moving in the v velocity in some direction. So we have to calculate the magnetic field between the plates, also above and the below. So uh, we have just seen that if a charge plate has some current density, we can easily calculate the current density. First, what will be the current density here? So it has some sigma here. This is moving in x cap. So, okay, so that means the charges are moving in this direction, and charges are moving in this direction, and then if you have y cap in this direction, so this will be the z cap. The charges are moving in this direction with this velocity. So the current that will flow will be in this direction only. So perpendicular to that will be this element real. Okay, that is in y cap direction. So this is how. Okay, now what is the charge density? So charge density will be K is equal to nothing but the current Di over dk per current or dl per current. And this is the charge density. Okay, but the current itself is given by sigma to be the L perpendicular because it's an infinite plane, large plane capacitor. So it's infinite plane. So let's say it's at the area A for time being, then the charge density will be like this. Okay, this is the magnitude of this. And then what will happen here? The negative one will be like minus sigma and V over A. But now this, because the charges are negative, the current will be in some this direction. So what we have a resulting picture that the current is in this direction and the other current is in this direction. So what is the field here? So you know that if you have to calculate just the like using this rule. Okay, so the current is going like this. So put up or up one will be this one. So due to this, the field lines will be going in. Due to this, we have to put a point here. P, oh, sorry, nothing plus P. Field line will be like going this, and this is the minus I current, plus I. So due to this current, because like this, so the field line also will be like this, but outside here, it will be coming out like this, and due to this, the field will be like this, because it is still in the right hand side. But here also, due to this, the field will due to this minus I, the field will come out, but due to this plus I, the field is still going in. So you can see that outside is zero, inside is the sum of the magnetic field of the both plates. So we can write it like this. That okay, first we should write magnetic field. One plate, one plate is nothing but pH, not a pH. Okay, it was mu 0 k mu 0 by 2 k, and then we have actually two densities, so we can sum it up the mod values. So P total will be B1 plus B2, B plus I minus I. The mod values are like
k 2 plus not k over 2, but we know that the current density is nothing but sigma b over a, and so this will be v is equal to sorry this no 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 actually the current that we have written itself it's not like this because the sigma is equal to q by a. All right. So in that means if we multiply the velocity, it will be like charge, and then over the time is dq over the dt into 1 over. It's already a current density. Need of a. Sorry for the mistake. So that means heat, and that means it's nothing but mu 0 sigma v plus mu 0 sigma v over 2 Now the next question is the next question is we have to first learn about the magnetic vector potential. So here the del dot P suggests that the introduction of a vector potential A in magnetostatics, because we know that हमारे पास जो भी अगर किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब वो किसी एक ऐसे फंक्शन का कर्ल होगा जिसके लिए वो क्योंकि जो कर्ल होता है वो रोटेशनल होता है और जो डॉट जो डाइवर्जेंस होता है वो दिखता है कितना फ्लो बाहर हो रहा है। तो अगर कोई फील्ड पूरी तरह से कर्ल कर रही है तो उससे कुछ भी बाहर फ्लो नहीं होता। इस वजह से एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि डेल डॉट भी जीरो होगा। अब हम फिर इसको इसका मतलब डेल डॉट भी अगर जीरो है तो हम बी को डेल क्रॉस ए के टाइप में लिख सकते हैं। तो डेल क्रॉस ए के लिख सकते हैं, लेकिन हमें और भी पता है कि अगर हम एम्पियर्स लॉ को एक एम्पियर्स लॉ का अगर हम एक वेक्टर वेक्टर फॉर्म लिखें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये ऐसा इस वजह से होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बी इज इक्वल डेल डॉट बी अगर जीरो है तो हम ये हमारे पास एक कंडीशन है। लेकिन एम्पियर्स लॉ की वजह से ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है वो होता है म्यू जीरो आई। लेकिन अगर ये आई हमें पता है, अगर ये वॉल्यूम ओके, सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे जहाँ पे हमें पता था अगर ए डॉट डी एल है तो उसको हम हमेशा से लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं जहाँ पर इसको हम डेल क्रॉस ए डॉट ये लिख सकते हैं हमेशा। ओके, और हमें यहाँ पे ये पता है अगर हमारे पास एक चार्ज करंट डेंसिटी हमें पता है आई इज इक्वल टू जो चार्ज करंट डेंसिटी होती है, सॉरी J is equal to the charge current density I is the current I over the area. Okay, so मतलब ये इस तरह से होता है जहाँ पर ये एरिया होता है और इससे करंट फ्लो हो रही होती है इस पूरे एरिया से वॉल्यूम करंट वो J है। तो हमें पता अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं I is equal to J dot J into the area element A, not the dot but the area। तो हम फिर क्या करेंगे, हमें इतनी इंफॉर्मेशन है तो अब हम देखते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ इस इक्वेशन को। ये एम्पियर्स लॉ है, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं कंफ्यूज नहीं करने के लिए।
dot dl is equal to mu 0 I enclosed करंट की हम बात करते हैं तो यहाँ से हम डॉट अच्छा v डॉट dl को हम अब ऐसे ही रहने देते हैं करंट की जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं j इंटू डी और म्यू जीरो रहेगा। अच्छा उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि जो क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl है इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस v। क्लोज इंटीग्रल इस लाइन के अक्रॉस होता क्योंकि यही एक एम्पियर बना सकते थे हम और इस सरफेस के अराउंड हम बना सकते थे। यहाँ पर डेल क्रॉस भी हम निकाल लेंगे डॉट डॉट बराबर j डॉट अब हम देखते हैं कि इन दोनों को अगर हम इधर ले आए सेम एरिया पर सेम सरफेस एरिया पर डेल क्रॉस बी माइनस म्यू जीरो j dot d like this equal to 0. Now we can easily write that it can because area element is arbitrary. This is not 0. That means that the argument that are there inside they has to have 0, j. Now what we can write next is all the things are followed. That this is the del cross b equal to 0 j Ampere's law. So Ampere's law in vector form. Okay, Ampere's law in vector form. And now we know this. We know this also that this is 0 because magnetic fields are curling in nature. They are not diverging. So they are like this. Now from these two equations and the vector identity it's like you can calculate del cross b is equal to 0 j, but this del dot b is equal to 0 implies that can be written as some vector cross product of some vector. So del cross a and is equal to mu 0 j vector, and with some identity you can write this as I think it can be written as del cross a minus del square a, and it will be like okay not del dot cross, it will be like del dot a and 0 j. And then again if you choose that del dot a is 0, it chooses such a vector that gives this, then you can write del square a equal to 0 j. Now if you notice the minus sign, now if you notice it's very similar del square b minus rho upon epsilon naught. So this is actually a Poisson equation. That we have learned. So this is in magnetic field, magnetostatic, static counterpart of electrostatic. Okay. Now with this, if this is true and assume that j is at infinity 0, then the a can be written like 4 pi I you no longer can write I because you are writing j density, tau, volume, distance r. So this is how we can define this now. And what is this called? This is a kind of potential because you can see v is equal to 1 over 4 pi epsilon 0
So tau theta over r. Okay. So this is very same. So it was the electric potential. Electric potential. So here you can show one-to-one correspondence. This is the vector potential, but it is a vector quantity. Here note V is scalar. Okay. Now we go to our next question, and that is okay. This is bound charges that we have learned earlier. Now, why I'm showing you this note here, there are uh, bound bound charges mu sigma b at the surface and rho b in the volume. Similarly, this vector potential due to a dipole can be written like this, and then again after uh, after the let's say there is have applied some magnetic field or nothing. Even though with this vector potential that has this magnetic dipole that has a magnetization m will show you bound current density and a bound current surface current density and a bound charge current volume current density. So why they are there? It's like that, like you are applying, you have a magnetic field uh, due to this current density Kb and Jb, and that magnetic field gives the magnetization M. So you can think of it in a reverse way, like if you have a magnetization M in a material, that means it is arising due to the bound charge density on the surface and the volume charge density inside the material. Okay, so it's very same. If you go back and check, it's very same. So this is how and where these surface current densities and the volume current densities are defined like this. So you have to check the cross product, like you did here dot product, m cross n, because it's charges are scalar and here the currents are vector quantities. So JB and all things you can calculate like this. Now find the magnetic field. The next question is that find the magnetic field of uniformly magnetized sphere. So what we have? We have a sphere that has been uniformly magnetized. Uniformly magnetized sphere. I just told that if you go from the center in any direction, or not from the center means like it will be like if you measure the magnetization at any place and it goes at some other place, the magnetization will be same. Means it will have some direction of magnetization like this, and it will be same with the everywhere the amplitude will be equal. That means that if m is along m naught in this amplitude in g direction, then we have just seen that kb can be calculated as the cross product of m cross n cap. So you want to calculate the current density at here, let's say it's surface here, and it's making an angle theta in the surface. So you can easily calculate that. Okay, then this is the bound current density. Then again the uh, J JB JB is the del cross. I think del cross M. Okay, ignore that fault here. It's del cross M, not del dot M. Okay, so now we can calculate that also. So this del cross M is nothing but M naught G cap, but M naught can be taken out. Del cross G cap is because this is constant, it's not function of x, y, or anything. So this is 0. But what about the KB? Was M cross N. So M cross N is nothing but M into and into the because this is the unit area. So it's an N cap is in this direction outside. So they are making an angle theta.
So m cross n will be like sine of theta, okay? And the direction will be somewhere it's a g direction, then it is cross product. It will be something that is pointing radially towards the at the surface. It will be tangential to the surface, not radial. It will be tangential to the surface. Okay, so it can be written as m. Okay, that means that tangential to the surface is just the phi cap coordinate that rotates around the 2 pi. So if you have radius r here, then m cross this n cap will be in this direction. Z cap is in this direction. The cross product of z cross m is a z, and this is a n cap. Z cross n will be in this direction. That means in this direction, the phi cap direction. Okay, so we can write this as m sine theta phi cap. Now, what about the uh, magnetic field? Magnetic field. So we know that V is nothing but 4 pi, and then the I dA sine theta over r square, or you can write this dl cross r cap. So if you want to know the magnetic field outside inside this at some position r, so but you have to also know the how much current is flowing through that surface, that at what that is being made by this small r sphere. So you have to calculate the bound current into this 4 pi. And no, first let's calculate the bound current. So bound current will be Kb is nothing but the Kb nothing but m sine theta phi cap. And what is the perpendicular direction to it? So that means the perpendicular direction to the surface, because now the current is on the surface. So we have to calculate the perpendicular direction to this. Okay. This is our current density. Earlier, like now we know the magnetic field spherical cell charge density sigma rotating at frequency omega h given by has has a charge density, has a current density sigma v, and the sigma is nothing but it's constant, is r omega, and the center of phi cap. So you see this is also constant, like you can compare it with m, and the phi cap direction is same, means it can be compared. Okay, sine theta also can be compared with sine theta. And for this uh, we just have to replace the sigma r omega
m. Then we know for the this given magnetic field for this spherical set that is rotating at frequency omega has a magnetic field of this kind 2 by 3 0 sigma r omega. Okay, so we can write this like this equal to 2 by 3 0 and sigma r omega. So you can directly write it like this. And now if you want to calculate uh, inside the sphere, uh, this is what inside the sphere, outside of the sphere, like D, and then 2 by 3 mu 0 by 3 pi r cube m. Okay, so question number 6, we have completed that. Now I want to show you what is the origin of this bound currents. So here you can see in this figure, so at the surface, you know that this thickness T. So if any current flows like this, then this surface, along the arrow direction, if you go, it's perpendicular to that. So that means the current that is flowing due to this strip divided by this T perpendicular means the K DL perpendicular is just T. So will be the surface current. But here you see inside this there are the uh, volume currents. But if you can see that volume currents are just like going in the circles. So and each you can see the neighboring volume current is being cancelled out. So that's why at the you get only the surface contribution in this integral. So here is the reduced picture of that where m is perpendicular to this and the I is like going like this and n cap is in this direction. Because m is in from the right hand root, you can just calculate like this for any given loop. You can just do this and you know the direction of m. And n cap direction is nothing but it's perpendicular to the surface. So this is how one can physically understand how this bound currents and charge currents are given, and they are how it works. Now, which of the following magnetic vector, which of the following magnetic vector potential give rise to a uniform magnetic field? Okay, so since we have last discussed that for a uniform for that magnetic field can be written as del cross A. Okay. So we have to check which of these magnetic potential vector potentials will give us a uniform magnetic field will be equal to del V0K. V0K is the final output that we want to get. Now we know that del cross A H. So we can write this as equal to I, J, and K, del over del X, del over del Y, del over del Z, and nothing but the AX, BY, AX, BY, AZ. Then we can just, let's say we want to check for option A. No, no, let's write down the A. It comes out to be from this determinant of this matrix. It's nothing but del over del y AZ minus del over del Z AY plus j plus j cap, and here we'll get del over del Z AX minus del over del X AZ, and then plus k cap we'll get something like del over del X AY minus del over del Y AZ. Okay, now
let's check with each options. Let's go for a equal to b0 z k cap. So we will put here and okay. So b0 z k cap. If b0 z k cap is the vector potential and this AZ and this is AZ. So let's put there other terms are 0. So I del AZ over del Y plus J del over del uh, minus J del over del X AZ. But since the AZ is a function of Z only, so it's going to be 0. So this is not good. Then again B, it's minus B0X J cap. So that means only the B0X survives. Oh no. Okay, only the AY term survives. This one and this one. So we now do this. We have this del cross A, and that is nothing but minus I del over minus I cap del over del Z AY nothing but X of minus plus A del over del X AY. And now if we solve this, then I is equal to I not AY nothing but minus X. So we solve it, it will be 0 because it's not function of x, but it is. But here we are getting minus b0k. So sign is opposite. So we can go for the next one. Next one is nothing but 0 by 2 minus yi cap plus xj cap. Now, when we are going to calculate this, so there are only terms with I cap and j cap will survive, and that means the ax and ay component will survive. So the first term will be 0 here. Only the component, only first term, okay, not this, not 0. So we have only I minus del ay over del z, and then plus j del z over del ax, and then we have k cap minus del ay minus k cap del az over, sorry, del ay over del x. So del ay. So here what we can do, we can write minus del ay over del z. So ay is x, so it will be 0. Then del az over del ax, it's y, so it will be 0. Then again, that's k vector, and it was like x here. So k, and then ay, it's okay. So del ax ay, and then del ay, that's ax. Okay. So it's ax y. So what we have? So we have k del ax y is nothing but minus y minus k del over, okay, this is x, sorry, this is x because the ay component is x and ax component is minus y. And the here ax is minus y, and both are in k direction. So 1, 1, it's 2, and this b0 coefficient is there. So just multiply with b0 by 2. And then you know that del cross A is nothing but 0k. So that means, and it is B, and this is what we are after. So that means the solution B0 by 2 minus yi cap plus xg cap is the correct answer.
Now we go to next question. Next question is that Ampere's law in magnetized material. So what happens? As we have seen that there are bound currents, there are volume currents. So bound currents is on the surface and volume currents is within the material. So let's call them at total sum of KB and GB uh, at total J bound current. Okay. So now this in the uh, now in the presence of this J bound current, what will happen? You know that 1 over mu 0 del cross B is nothing but the current. This is what we have just proved earlier. I just proved. So you can write this JB as it is. No, no, JF as it is because it's a free current because you one can apply a free current by just applying a potential across a wire. And let's say the wire is magnetized. So there is the bound current present inside that material. So, and that can be written as inside the material at J V is equal to del cross M. Okay. Now what will happen? Due to this, there will be, you can write it like this, just cross term one side. So you can again define a new quantity, which is nothing but, I think, yes, which is nothing but H is equal to 1 over B mu 0, 1 over mu 0 B minus M, and then you can write this as like, sorry, this is typo. Here it should be inside this del cross B over 0, and the bracket terms change. I will change it. Okay, so here you can write it like del cross H is equal to J free, and also because we know that del dot B is 0, so again it implies from there that if you in this equation H is equal to 1 over 0 B minus M, so del dot H is equal to 1 over mu 0 del dot B minus del dot M. So del dot B 0 we know for sure. So del dot H is equal to minus del dot. So keep this in mind also. It will be very handy when we will be solving some numericals. Okay, now we'll go to our next question. The question number 8 is find the magnetic field intensity. Question 8 is find the magnetic field intensity when the magnetic vector potential is A given by xi cap plus yj cap plus 3z k cap. Okay, so it's a magnetic field intensity. What we are going to do in question number 8, we are just going to take the cross product because we know that V is equal to del cross A. So this is how you can take the cross product. Now you do this. V is equal to nothing but divide. It's 0. It's 0. It's 0. It's 0. It's 0. Okay. Uh, okay. No, no. This should be del x ay. So okay. And del y ax. That's also okay. This is that. Okay. Now we will turn on the slide. So we can see that the answer is 1. That out of B will be just 1. Okay. So these k caps are not be nothing but 1. Now the next question is boundary condition. So we know that closed integral B dot dA will be 0 because the del cross uh, del dot B is 0. Okay, so del dot B is nothing but to a volume integral. That means so the closed integral V dot dA is 0. That this implies that del dot B is 0. So we have this pillbox we can make up and down, and the area is same. So the B above and the B below tangential component should be 0, and sorry, the perpendicular component, and the tangential component is not 0 because Ampere's law. So this is how you can write the parallel that are going like this, and the current is in the perpendicular direction. So in the presence of magnetic field, this perpendicular is replaced with the Ampere's law.
and then it is defined like this: H above minus H below over like this. And then H parallel means the parallel components are defined like this. So there are question on XY plane boundary between the free space and the magnetic field with material of relative permeability mu r. The magnetic field in the free space is given like this. The magnetic field in the magnetic material is okay. So at the boundary, some boundary, the magnetic field in the free space is given like this, and the magnetic in the magnetic material is like this. So it's mu r means mu zero. It's mu r. The magnetic field in the free space is x I. Let's say it's j. This is I. So what will happen? This is bx and this is by. It's I. Let's say this is j. Simplicity by bx. So now what we have? They are asking what will happen to the magnetic field in the material. Like here, what are the components? Then we can say that the parallel components, the perpendicular components are going to be equal of this G. So we have this, and we know that this here, this okay, and uh, because the boundary conditions allows us, because this there is no charge current, so it's zero, and so H parallel will be equal also because there are no charge current, and B parallel is going to be also equal. So when B perpendicular and B parallel are going to be equal. So what we are going to do is the following. It's given like this. So there is no charge current at the surface, it's zero. So what we can do, which we can go back to the boundary conditions that we have. Okay, so these are the boundary conditions. H. Okay, so this is how you change it. But we know that uh, H parallel above and H parallel below is equal to H parallel below. So we can equate from here where so we know to these two things. Okay, so this is okay. So that means that the perpendicular component to this boundary are the by. So by1 is equal to by2, but uh, the other things that other question in the question. Okay, so the components are bx I cap and bz cap, k cap. So k cap is also perpendicular. So y1 is y2, and this boundary is x, and there is some z component. So z component is also parallel to the boundary. It's not perpendicular. So it's lying on the plane. So only by1 perpendicular, and others are the from here we can get this one, and for others like here. So we can write this in terms of mu zero and H parallel are bx cap I plus bz k cap, and then this parallel below is this mu r, okay, sorry, mu bx in the material,
and By in this K cap, BZ K cap, sorry, but they are parallel. Now what we do, that's mu 0 over mu and Bx I cap above plus Bz K cap above, and it's in the medium 2. So now be in medium 2, uh, medium 2 is this, but you know that mu 0 over mu r is nothing but mu over mu 0. Just to reverse this, it will be 1 over mu r dx I cap plus bz k cap, and then okay. Now the next question is magnetic susceptibility. So we know that for any magnetic material inside the M is magnetization, chi M can be this can be related with the field intensity, the magnetization, but we can also relate the B with uh, H as we have said previously. So from the equation H is equal to 1 over mu 0 B minus M. So here you can write this 1 over mu 0 B plus, sorry, this is minus chi M H. Then you can write this as H nothing but 1 plus chi M into mu 0 is equal to B. So uh, B is equal to H, where mu is nothing but mu 0 1 plus chi M, and is nothing but 1 plus chi M, chi is mu R. So this is how it is written. Okay, so now what is next? At the interface between two linear magnetic material, another is magnetic, uh, and another material, the field lines bend so that tan theta 2 over tan theta 1 is equal to mu 2 over mu 1. So we have like this, some setup like this, and the lines gets bends here. So it's theta 1 and it's theta 2. So this is B2, this is B1, at this is mu1, this is mu2. We know that B1 perpendicular is equal to B2 perpendicular. So B1 perpendicular is going to be like as a theta, so B1 cos theta, and B2 perpendicular is theta, so B2 cos theta, and mu 0 uh, mu 0 sin theta means there is nothing at the boundary, so the parallel one also be the current is 0, the parallel one also going to be, but H parallel at the 1, H parallel at the 2, they are both going to equal, so it will be like B mu 0 mu 1, sorry, mu 1 B sin theta, 1 sin theta is equal to mu 2 2 sin theta, B2 sin theta 2. Okay, now we have to prove that tan theta 2 over tan theta 1 is mu 2 over mu 1. So we because this B1 perpendicular was the cos theta, it's a B1 is equal to B2 cos theta 2. So okay, it's a theta 1. Now let's divide equation A and B. So what we have will have B by A, equation B by equation A implies that tan theta 1 mu 1 is equal to mu 2 tan theta 2. So tan theta 1 over tan theta 2 is equal to mu 2 over mu 1, and this is how it can be solved easily. And at last, I want to acknowledge Professor Manoj Kumar Harpola from IIT Kanpur, NPTEL team, PMR team, and Department of Physics, IIT Kanpur. And I want to just emphasize that those who have missed this lecture, they can watch it on YouTube, and they will see you in the next session.
on every Saturday from 5 to 7.